Can you see the whiteboard now? Yes, sir. Okay. So for the reaction, we derived one formula that was thing AY is equal to FAD over FA. And in the same way, let's suppose we have the same beam for which we are supposed to plot the influence line diagram for shear force at point E. This is same point D, and we have to plot the shear force diagram for point E. Just like we did in the case of what do we need to do for example, first I selected point D. I have to apply the unit load at point D and then calculate the shear force at point E. Since it is an indeterminate structure and I cannot calculate the shear force directly, so we have to use some method, and we will use the same method, that is the force method. And in the force method again we will do the same thing, that first we will remove the capacity of beam to resist that particular shear force by applying, let's say, a roller guide on which the shear force can act. And then once we have removed the capacity, then in the primary structure we will apply this initial load or the initial unit load at this point D, which is our point under consideration. And due to this unit load, let's suppose that the deflection that will occur at point E will be FED, which we can also call it as the deflection at E due to, or I can call it, we can call it as deflection at E due to when the unit load is acting at D. Then, as you remember that in the compatibility equation, we have to apply the redundant action or the unit redundant in our next structure. So if I apply the unit redundant over here, that will be 1 and 1, and due to this unit redundant, the deflection that will be produced will be again FEE, since it is due to the shear force that is acting at point E, so that will be VE. Now if I write the compatibility equation for this beam, I will have 0 is equal to FED plus FEE into VE. Again, if I simplify, it will give me VE is equal to 1 over FE multiplied by FED. Now again I will apply the Maxwell theorem, and we know that from Maxwell theorem that this FED is equal to FDE, which means that if unit load is acting at point or the deflection which is being produced at point E due to unit load at D is equal to deflection that is produced at point D due to unit load acting at point E. So we will again substitute the same thing into this one, and we will get FDE over FE. Now this is our formulation for the calculation of shear force, and the idea is same, and the method that we will adopt to solve the beam for the shear force will also be the same. We will again use the conjugate beam method to calculate the deflections at different points along the beam, and then we will simply use this formula for the calculation of shear force. Let's just quickly, or I can quickly derive it for the case of movement. Let's suppose we have to plot the, I will do it over here. Let's suppose we have to do, we have to plot the influence line diagram for movement at E. Again, in that case, this primary structure will remain same, and due to this unit load that will act onto this beam, we will have the deflection as FDE, and then in the case of movement, since over here we have applied the shear force, but in the case of movement we have removed the capacity of the beam to resist the bending moment at this point, so we will have an internal hinge over here, and then in the redundant structure we will apply this unit moment over here. And due to the application of this unit moment,
the beam will deflect something like this one, and we will have angular displacement in our structure, and that angular displacement will be alpha E in the case of movement, and the deflection will be alpha EE into ME. So once we have the this deflection, we will write the compatibility equation, that will be alpha E ME is equal to 0, and again if I simplify this one, I will get 1 over alpha E into FDE. Now this will be our equation for the calculation of moment at different points. We will calculate the uh, angular displacement at the point for which we are supposed to plot the ILD, and then we will calculate the deflections at different points, and when we divide both of these factors, we will get the ordinates of the influence line diagram. So this is how you do it for the case of shear force and bending moment. Now if you have any question about this, you can ask me. Otherwise we can move on to the example problems. सर ये हम ILD लाइक किस लिए बना रहे हैं, कौन से पॉइंट के लिए बना रहे हैं? For लाइक point पहले E, the अच्छा E point. सही है, थैंक यू सर. सर Yes. सर प्राइमरी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो कोई एक सपोर्ट या मतलब स्ट्रक्चर को डिटरमिन बनाते हैं, तो इसमें आपने ई में रोलर सपोर्ट किस तरह ऐड कर दिया? अच्छा, आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या करते हो बेसिकली? फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ये नहीं होता कि आप लेट सपोज, अगर जब हमें रिएक्शन रिक्वायर्ड थे, अब सेम एनालॉजी यूज़ करनी है हमें। जब हमें रिएक्शन रिक्वायर्ड होते थे तो हम क्या करते थे, उस रिएक्शन को रिमूव कर देते थे। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है, अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिएक्शन ही रिक्वायर्ड हो सकते हैं, वो तो एक कॉन्सेप्ट था ना रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। जब हमें रिएक्शन रिक्वायर्ड होते थे तो हम उस रिएक्शन को रिमूव कर देते थे, और फिर रिडंडेंट स्ट्रक्चर में उसी रिएक्शन पे फोर्स लगा देते थे या वो रिएक्शन अप्लाई कर देते थे। अब सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आप चलो, और अब हमें रिक्वायर्ड है शेयर फोर्स, ठीक है, पॉइंट ई पे। तो हम इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कि जो शेयर फोर्स रेजिस्टिंग कैपेसिटी है उस पॉइंट की, वो रिमूव कर देंगे। वो रिमूव करने के लिए ये हमने एक रोलर गाइड लेट सपोज कोई भी एक सपोर्ट लगा दी। इसका मतलब ये है कि ये इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे शेयर फोर्स रेजिस्ट नहीं कर सकता। सेम कॉन्सेप्ट है, जब रिएक्शन फाइंड करना था तो रिएक्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी खत्म कर दी थी इस पॉइंट पे। जब शेयर फोर्स फाइंड करनी है तो शेयर फोर्स रेजिस्टिंग कैपेसिटी खत्म कर दी है इस पॉइंट पे। और सिमिलरली जब रिडंडेंट स्ट्रक्चर बनाया है तो वही शेयर फोर्स, जिस तरह यहाँ पे हम रिएक्शन अप्लाई कर देते थे, और इस केस में हमने ये शेयर फोर्स वी अप्लाई कर दी और उसकी बेस पर डिफ्लेक्शन। तो सेम एनालॉजी यूज़ की है हमने। अब वो जो फोर्स मेथड की कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन लिखते थे, वो तो उस वक्त हमें ज़रूरत उतनी थी कि हम सिर्फ रिएक्शंस के लिए लिखते थे। अब हमने वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, और वो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, वो तो एक कॉन्सेप्ट था ना, ज़रूरी नहीं था कि वो सिर्फ रिएक्शन पे ही अप्लाई हो, वो किसी भी चीज़ पे अप्लाई हो सकता है, राइट? सर ये जो FDE है ये हमारी डिफ्लेक्शन है कि डिफ्लेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी है? ये भी तो सर डिफ्लेक्शन पहले तो है। हम डिफ्लेक्शंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, अब हम F से क्यों कर रहे सर हैं? लेकिन यार वो कोई ज़रूरी नहीं है, कल भी मैंने डिफ्लेक्शन को डेल्टा से भी कर दिया था, एफ से भी कर दिया था, जस्ट टू बी कंसिस्टेंट विद द बुक, तो वो मैं उसको एफ से कर रहा हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हमारे पास फिर भी क्या है? सर फिर भी स्ट्रक्चर डिटरमिनेट नहीं है। तो ठीक है ना, डिटर्मिनेंट नहीं भी हो, हमने ज़रूरी तो नहीं है प्राइमरी स्ट्रक्चर में डिटर्मिनेंट ही करना है ना हो वो डिटर्मिनेंट। प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाने का पर्पज़ ये है कि जो चीज़ हमें चाहिए, हमने वो रेजिस्टिंग कैपेसिटी उसकी ख़त्म कर दी। अब हो सकता है जब हम इसको सॉल्व करें तो हम कोई और मेथड लगा रहे हो या कोई और तरीका लगा रहे हो इसको सॉल्व करने का। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि करते क्या थे प्राइमरी स्ट्रक्चर में। यही करते थे ना कि जो चीज़ फाइंड करनी होती थी उसको हम वो उसकी कैपेसिटी रिमूव कर देते थे, वो रेजिस्टिंग कैपेसिटी।
ठीक है। वो रिएक्शन के ओके केस में ये होता था कि हम रिएक्शन खत्म कर देते थे तो वो डिटर्मिनेट हो जाता था। अब शेयर फोर्स के केस में हम ऑब्वियसली शेयर फोर्स ही खत्म करेंगे ताकि वो डिटर्मिनेट हो। सिर्फ अभी मोमेंट के केस में एफडीई फ्लेक्सिबिलिटी की लाइक एंगुलर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, मतलब उसी नहीं, तरह वो डिफ्लेक्शन ही होगी जो मूवमेंट के केस। फॉर एग्जांपल मूवमेंट के केस में आपने चेंज क्या किया है, सिर्फ आपने यहाँ पे यूनिट लोड लगाया ना, यहाँ पे तो आपका वही जो पॉइंट ई है वो तो सिंपल पॉइंट ई है। आपने मूवमेंट तो इस स्ट्रक्चर में रिडंडेंट स्ट्रक्चर में जाके लगाए हैं, उसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे तो कोई मूवमेंट नहीं लगाया था आपने, यहाँ पे तो सिंपल डिफ्लेक्शन वट एवर लेट्स सपोज ऐसी कोई शेप बनेगी, तो ये तो डिफ्लेक्शन ही हुई है हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगाया आपने मूवमेंट का। लेकिन जब ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें आपने मूवमेंट लगा दिया, उसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। से। ओके, so now let's suppose we have this beam. Okay, let's suppose we have this beam and we have to plot the ILD for सर बीम नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं क्या कर सकता हूँ सर? क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, आप स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर दें लाइक। ऐसे। यस सर, थैंक यू। Okay, we have this beam for which we have to plot the ILD for bending moment at this point D. Now again, one way is that we will insert the internal hinge and we can get the qualitative shape of the ILD. And when we do this, let's suppose I will insert an internal hinge over here and apply the unit moment and get the deflected shape that will be equal to my ILD. And if I plot it, it will be something like this one. Now again, this is just like I told you yesterday that you will get perfect on it with practice, so it will take time. So this is at the qualitative shape, and now we will apply the again the same concept to get the values or the ordinates of this particular IIT. So just like we did, we will insert an internal hinge over here and apply these unit movements. Once we have these unit movements, we can get these reactions. And once we get the, I will just write briefly the methodology. First, just like we did in the case of reaction, we applied the unit reaction. So in the case of movement, we will apply the unit movement or insert the internal hinge over here. The purpose of internal hinge is to show that this beam cannot resist the moment at this point D. So we will insert the internal hinge, apply the unit movements, calculate the reactions, and once we have the reactions, we will plot the bending moment diagram. And once we have this diagram, we will plot the conjugate beam, and from this conjugate beam, we will calculate the deflections,
and the alpha factor, and once we have these two factors, we will use this simple formula for the calculation of, I will write it as delta, for the calculation of movement at different points, and once we have these movement we will simply plot it onto this shape to get the quantitative ILD. So following the first step, we will insert the internal hinge at this point D, and once we have the internal hinge, it will be convenient for us to get the reactions. So this is the internal hinge. We have the unit load as 1, and by inserting the internal hinge, we have made this beam as determinate structure. We can solve the right side separately and the left side separately as well to get these reactions. So can anyone give me this reaction at support A? What will be this reaction RA? Sir, 1/9. 1/9. ये अलियान तुम तो तुक्के लगा रहे हो ना? सर तुक्के नहीं लगा रहा सर। 1 BMD है सर, 9 RA है तो 1 क्या 9 से क्या रिलेशन है? सर अगर आप उस पे लगाते हैं पॉइंट डी पे, अगर आप उसको सम ऑफ मोमेंट्स करते हैं। हाँ, okay. All right. So the reaction at this point will be 1/9 or 0.111, right? So how I did it, I solved this part separately. Let's suppose this is D. So I took the moment at A equals to 0, and that will be 1, or moment at D equals to 0, so that will give me RA cross 9 and -1 equals to 0, so RA will be 1/9. Now I have this reaction. अब इस reaction से क्या हुआ है, हमारे पास ये एक reaction आ गया है. अब we can simply ignore this, or we can even use this to solve the right side, but let's suppose now we have this reaction. Again we will consider it as a one single beam. So in this beam, now I have this reaction RA, and I need to calculate this RB and RC. अब ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया. तो someone was asking कि ये तो indeterminate structure ही रहेगा. So this is how we change it into determinate structure. We applied an internal hinge over here, और उस internal hinge की वजह से we have made this a determinate structure. So now can you give me this reaction at point B? Sir, RC is 1/2. RB calculate. RC is what? Sir, RC 1/2 है. Can someone else? R 0.22 ये किसी ने क्या बोला 0.22? RB सर पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव है सर. हाँ, तो अब RC कैलकुलेट करो. तो वो 0.11 होगा. ये 0.22 और RC is equal to 0.11. Then the sum will be 0. Right. But sir, हम उसको separately नहीं ले रहे. इसको Like मैं अपने वही आपको बता रहा हूँ. हाँ, कि इधर हम उसको सेपरेटली कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास एक रिएक्शन आ गया है, तो हम अगेन उसको एक सिंगल बीम कंसीडर कर लें और कैलकुलेट कर लें. बट आई थिंक अगर आप सेपरेटली भी करें तब भी वो 0.11 ही आएगा. लेट मी जस्ट ट्राई.
सर आप सेपरेट करें तो आंसर सही आते हैं वैसे। आंसर सही आता है। यस सर, मतलब x आपका RB आपका आ रहा है -0.222 और RC आता है आपका 0.111। अगर आप इसको आपको लेकिन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा दो इक्वेशंस बना के। Okay, just give it a try. I think it should be same. I will also try it, and if you can't do it, I will see. But ये same ही आना चाहिए. उसने एक ने कर दिया. So anyway, you can try it by both. Let me just. Okay, you can give it a try. I will also try it, and I think it will give the same answer. Okay, so now we have this reaction, and we will we सर and yes. सर अगर आप कह रहे हैं सेपरेटली करेंगे तो फिर उस तरह तो आरबी और आरसी सेम नहीं आने चाहिए एक तरह से। क्या आने चाहिए? यानी कि अगर आप अगर सेपरेटली आप कह रहे हैं तो आरबी और आरसी सेम नहीं आएंगे क्योंकि एफ ऑफ वाई F of y क्या है? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जीरो हो जाएगा ना अगर आप तो फिर फिर RC plus RC equals to 0. अच्छा, फिर आप RC कैसे निकालोगे? फिर भी आपको मूवमेंट तो लेना पड़ेगा ना किसी पॉइंट। सर सेपरेटली करके डिफरेंट आता है, लाइक अबाउट बी अगर हम लोग लेते हैं तो इट्स सिंपल 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 18 करेंगे तो यस वो सर 1/2 वन आता ओवर है। यस सर 1/2। अगर लेट्स सपोज हम सिग्मा m of b equals to 0 करें तो दैट विल बी r into 18 काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, फिर 1/18 आता है। 1/18 आ रहा है सर और एक और नेगेटिव में होता है पॉजिटिव में होता है। 1/18 ओके, सर आई हम विल लोग आर डी को भी तो कंसिडर करेंगे। वन दूसरे साइड पे भी तो है मूवमेंट। हाँ आर डी। तो उससे तो वैसे ही 0 हो जाएगा। सर मैंने ये और एयर शिफ्ट नहीं होगा उस पे उस साइड पे तो फिर रिएक्शंस। Okay, I will check this. Let it be as it is right now, but I will check this thing. And I think I am missing something. I will check this thing and let you know in the next class. Okay. Meanwhile, you can also try, and if someone find how to do it, he can also let me know. But I will check this. That how to deal with this. Okay. Let's not spend too much time on this. I will check this and let you know tomorrow. So for now, just let these reaction as it is. Okay, so we have these reactions as, so the next thing that we need is we need to find the deflections at different points. So for that again we will use the conjugate beam method, and in that method we have to plot the bending moment diagram for this one, or M over EI diagram. So what will be the component of, and just remember that we have applied an internal hinge at these points. So what will be the bending moment at this point B?
So over here the bending moment will be 0. At B it will be 0.111 into 18. So that will be 1.99, or I can call it as 2 over EI. And again by at point C we will have the bending moment equals to 0 at this point. So this is the shape of our bending moment diagram or M over EI diagram for this particular beam. And in conjugate beam we have to load this beam with this M over EI diagram. So can anyone tell me which support should I place at this point D? So roller. Roller support. And what about point B? This B. Hinge. At point B we will have the hinge support, and at point D, since we have an internal hinge, so we will have a roller support at this point. So now this is our conjugate beam, and we will load it with M over EI diagram. E, and C. So once we have this, we can calculate. Now again we have to calculate the moments at different points, and for that we do need the reactions. So to get the reaction we can separate this beam at the point B dash, since we have an internal hinge over here. So when we separate this one, so what will be the reaction RC in this case now? Can you give me the reaction? This ordinate is 2 over EI, and this distance is 18 feet. So what will be the reaction RC? So 18. So that कितना? No, wait, sorry. एक second. So 12. Can you do it again? सर RC चेक कर अच्छा ये फोर्स कंपोनेंट कितना है? लेट्स से ये ट्रायंगल और जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी हाफ इनटू 2 1 into or 18, so that will be 18 over EI, and it will be acting at the centroid, so it will be 18 over EI. और ये डिस्टेंस कितना है? 1 over 3 into 18, so that will be 6. So if I calculate the movement at point C, let's say sigma m b, it is b, so that will be 18 over EI. One force is this one, multiplied by moment arm, that is 6, and the other force is this RC itself, so it will be plus RC into 18, and the reaction that we will get over here will be RC equals to minus 6 over EI. So RC is in the downward direction 6 over
EI, right? Any confusion about this one? So now what will be, just now we have one reaction, just combine this beam into one again. So in this beam we have this reaction 6 over EI, and now calculate the other two reaction. What will be RD and R? Give me these reactions quickly. What will be RD and RA? सर 120 आ रहा है आरडी. So what is RA? Anyone? सर हम लोग दूसरी साइड पे वी भी लेंगे ना, बट इन द ऑपोजिट इसके डायरेक्शन. लिए पहले हमें VB कैलकुलेट करना पड़ेगा. So better way is that we should just skip it and हम उसको एक सिंगल बीम कंसीडर करके कर लें, क्योंकि अब तो हमारे पास दो अननोन्स हो गए ना, A और D, जब हमने इनको कंबाइन कर दिए. उस्मान, क्या रिएक्शन आए हैं? अभी इक्वेशन नहीं आ रहे. कितना आ रहा है? जल्दी कैलकुलेट करो ना. सर इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे आपने कल करके दिया था. कैसे किया था कल? 3 पॉइंट्स आपने निकाला था बेसिकली कल वाले को, तो मतलब 0 फीट पे, 6 फीट पे, 12 फीट पे. तो अब इसको भी अगर हम 3 में डिवाइड कर दें या 2 में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें. आपकी मर्जी है ना, आप जैसे मर्जी कर सर अभी आप इसको सेपरेटली नहीं ले रहे हैं. थैंक यू. अगर मैं इसको आप सेपरेट लूंगा तो पहले मुझे VB भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? अभी आप इसको आर ए प्लस आर टी और साथ में ये अब 2EI भी ऐड मैंने होगा. इसको पूरी बीम में कंसीडर कर लिया दोबारा से. मेरे पास RC तो आ गया ना 6 ओवर EI, ये जो RC इधर हमने कैलकुलेट किया. ठीक है, अब मैंने इस बीम पे 6 ओवर EI लगा दिया है. अब मेरे पास कितने अननोन्स रह गए हैं? एक ये A अननोन रह गया, एक ये D अननोन रह गया, और तो कोई अननोन नहीं है. तो दो अननोन्स हो तो वो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ सिंपल इक्विलिब्रियम से, राइट? जी सर. वही मैं कर रहा हूँ. मतलब आप सेपरेटली भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको तीसरा अननोन भी चाहिए होगा, दैट इज VB. तो दैट विल मेक थिंग अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. सो सर इसमें जो राइट वाला ट्रायंगल है उसके सेंट्रोइड से लेके पॉइंट डी तक हम डिस्टेंस लेंगे मोमेंट एट डी निकालने के लिए, उससे आगे यस, तक. जिस पॉइंट पे आप मूवमेंट निकाल रहे हो उस तक डिस्टेंस लोगे.
सर RG -48 और A है D +18 आर डी कितने हैं? -48 So RD is 48 over EI. And what about RA? +18 So it is 18 over EI. So these are the reactions, and to do it, just take the moment at point A first and write down the equation. We have two triangles, one this reaction and one this reaction. That will be unknown. So when you write this equation, you will get RD, and once you have RD, you will simply substitute it into this one. RD was -48 over EI, and then you will get, and in this equation also you have to write the loads. There are these loads as well, 2 over EI, not just the three reactions. So when you substitute into this one, you will get RA. So I leave it up to you to calculate these values. So now in this conjugate beam, we have all the reactions, and our next step should be to calculate the deflection. So to calculate the deflection, obviously our primary equation is moment is equal to 1 over alpha E. By EE I mean the point for which we have to plot the ILD, and in this case we have to plot the ILD for point D, and we will calculate the deflection at any point, and then we can get the ordinates. So let's start with point A. Obviously for point A I will write this delta. So for point A, delta A equals to MA, that will be equal to 0. What will be moment at point D? No, one way that you plot the bending moment diagram for this one, or the other way is you can just calculate it directly by considering the forces on the left side. So what will be the moment? सर यूनिट लोड का दें क्या इसमें क्या? सर यूनिट लोड सर यूनिट मोमेंट यूनिट मोमेंट क्या? सर पहले का पे कंसिडर करेंगे तो वो यूनिट मोमेंट को हमने उधर कंसीडर करके उससे डायग्राम बना के हम बीम पे आ गए हम अपनी। अब हमारे पास यही है जो भी है। अब हम इसी बीम से, सिंपल एक बीम है, लेट्स सपोज ये, इस पे आपने डी पॉइंट में मूवमेंट कैलकुलेट करना है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हो, कैसे करते हो? लेफ्ट साइड की फोर्सेज हैं, उनसे आप हर पॉइंट का मूवमेंट कैलकुलेट करते जाते हो। अब लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट डी, इसका मैंने मूवमेंट कैलकुलेट करना है, तो लेफ्ट साइड पे मेरे क्या फोर्स है? 1 is 18 over EI, and your distance I think is 9. Yeah, it is 9 feet. That will be 9, and the second force is this triangle itself, so that is also in the clockwise direction, so it will be half into, what will be this ordinate? 1. So that will be 1 multiplied by the distance is again 9, and this lever arm will be 1 by 3 of 9. So what will be moment at D? 175.5. So that will be 175.5 over EI. Any confusion about this one? This is just a beam और मुझे मूवमेंट चाहिए पॉइंट डी पे। अब या तो मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम प्लॉट कर लूँ इसकी, या मैं डायरेक्टली लेफ्ट साइड की फोर्सेस कैलकुलेट करके हर पॉइंट पे मूवमेंट कैलकुलेट करता हूँ। And someone said that the movement should be zero. It should not be zero. Internal आपके पास कोई रोलर होगा या हिंज सपोर्ट होगी, तो you will have some value of movement. अगर आपके पास एक्सटर्नल या एंड पॉइंट्स पे रोलर या हिंज है, तो वहाँ पे वो बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। Now what about bending moment at point B? Anyone?
इब्राहिम कितना होगा बी पे मोमेंट? सर एक मिनट बस वो डिस्टेंस देख रहा हूँ मैं। इंटरनल रेंज पे मोमेंट कितना होता है? सर जीरो 0 और जीरो It should be 0. What about, let's take another point over here. सर ये चीज दोबारा समझा दें, जीरो कैसे है? कैलकुलेट कर लो, हम्म कैलकुलेट भी करोगे तब भी 0। अब इंटरनल रेंज पे मूवमेंट्स होते हैं समथिंग लाइक दिस, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाती है तब वो मूवमेंट्स, अब हम होल बीम कंसीडर कर रहे हैं, राइट? तो सर पॉइंट ए से फिर मूवमेंट नहीं होगा, करेगा इफेक्ट किस चीज? अच्छा हाँ, पॉइंट ए पे मूवमेंट नहीं। वो आप बेशक ले आओ इधर, वो तब भी 0 ही आएंगे। अच्छा चलें, ठीक हो गया, सही, थैंक यू। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर पॉइंट ई। वन वे इज कि हम लेफ्ट साइड से चलें, लेकिन इजी मेथड इज कि हम राइट साइड से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मूवमेंट एट ई विल बी E, that will be equal to 6 over EI into 9, and the other force is again this triangle, that will be, so this is clockwise, that will be counterclockwise, minus half and yes, just keep one thing in mind कि जब हम राइट साइड से चलेंगे तो हमारी साइन कन्वेंशंस ऑपोजिट हो जाएंगी। तो अगर इधर हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो राइट साइड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल टेक क्लॉकवाइज एज नेगेटिव। So that will be minus 6 over EI, and this will be plus half into 9, and this we also discussed this yesterday. You can do it from the left side, but just to be convenient I am doing it from the right side. So that will be half into 9 into, again the component is 1 and the lever arm is 1 by 3 of 9. -6 ओवर EI into 9 नहीं होगा? Yes, for 9 over. So what will be the moment? -40.5. So that will be minus 40.5 over EI. And what will be alpha D पॉइंट पे? अब लेट सपोज हमारे पास ये एफ डी ई की वैल्यूज, ये डेल्टा डी की वैल्यूज तो आ गई हैं 4 और 5 पॉइंट्स पे, वी कैन यूज दिस वैल्यू टू प्लॉट द शेप ऑफ एल डी, बट वी स्टिल नीड अल्फा डी। सो व्हाट विल बी अल्फा डी? फाइज अल्फा डी क्या होगा? सर अभी कैलकुलेट करो उसे। कैलकुलेट करने की जरूरत है? अल्फा डी होता क्या है कॉन्जुगेट बीम? सर क्या? अल्फा होता क्या है कॉन्जुगेट बीम में? सर डिफ्लेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी सर, रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। रोटेशन होती है ना, तो रोटेशन क्या होती है? सर मोमेंट। तो डिफ्लेक्शन भी मूवमेंट होता है, रोटेशन भी मूवमेंट होती है। इस केस में सर होगा। If you remember, conjugate beam में shear force is equal to rotation and movement is equal to deflection. तो D point पे जो shear force या force होगी that will be equal to your rotation, right? तो क्या force है?
How much is the force at point D? 48 over E यही नहीं है. 48 So ये हमारी डिफ्लेक्शन नहीं होगी या रोटेशन नहीं होगी, right? Any question about this one? So there is no question, and this is our force. And once we have this force, let's plot the ordinates of. So what will be? So I'm sorry, एक दफा दोबारा समझा देंगे 48 over ये कैसे किया है? 48 ओवर ये आपके पास एक रिएक्शन है डी सपोर्ट पे या डी पॉइंट पे. जी उसका जी. क्या मतलब है कि वो डी पॉइंट पे फोर्स जो भी एक्ट कर रही है पूरी, तो सही. कॉन्जुगेट बीम में डी पॉइंट पे जो भी शियर फोर्स होगी या फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू योर रोटेशन. अब हमें रोटेशन चाहिए थी तो हमने यस डायरेक्टली ये 48 ओवर ये यूज कर लिया. ठीक हो. थैंक यू सर. So what is this ILD component for point A? A पे deflection is equal to 0 and alpha is equal to 48. So that will be 0. What about point D? We have deflection as 175 and the alpha factor as 48. So what is ILD component for point D? Class, can you be a little quick? 3.65. It is 3.656. And what about point B? So 0. For point B we have 0. What about point E? For E the deflection is minus 40.5 and this component is 48. So what will be this factor? Minus 0.84. Minus 0.84. And what about point C? Again the movement at point C will be 0 and this component is 48. So now we have these components or these ordinates of ILD for bending moment. And if we plot this on the beam, we will get the shape of ILD. At point A it is 0, at point D it is 3.656, then again at point B there was a roller support, again it will be 0, and at point E we have 0.84 additive, and then over here again it will be 0. And if I combine these points, there was a roller, and this component is 3.656 and this component is minus 0.84. Now if you see, this shape is somewhat similar to what we plot or what we did over here. So by solving this whole beam we got almost a similar shape as we did, or you can make a kink over here, it's up to you. Just make a kink over here and you will get the similar shape. So this is how you do it for influence line diagram, and for your practice I am giving you from Hibbler chapter 10. There are some problems from 1041 to 1047 related to the influence line diagram. We didn't do the example problem uh, about influence line diagram for shear force, but we will do it in tomorrow's class. But till then you can practice these problems, and if you can do it for shear force then it's well and good. It's also similar, there's not much complexities in that. Now if you have any question about this problem you can ask me.
सो ये जो पीक बनाया था 3.656 पे, सो आईडी में इसको कोई वो कोई स्पेसिफिक हमें लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, एज इन जैसे हमने ये पीक बनाई है तो कोई दोनों में से कोई एक बना सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक बनाना होता है? स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ आईएलडी हुई हमें मतलब पहले से पता है कि वो पीक बनती है, किंक बनती है, मतलब इस तरह से आपका वो रोटेट होता है तो ये साइड भी ऊपर जाती है ये, और ये दोनों कंबाइन होती हैं। अगर आप एंड पे बनाओगे तो एंड पे तो आप नहीं गेस कर सकते, तो इट समथिंग लाइक कि आपको बैक ऑफ द माइंड यू नो कि ये शेप बनती है, तो यू जस्ट मेक दिस शेप। सही राइट। सर वो कल तो आपने कहा था कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए आईएलडी कर्व बनती है, तो सर इसकी कर्व नहीं बनाएंगे? तो ये भी कर्व शेप ही है ना, ये देखो ये कर्व शेप्स है। अगर कर्व ना होती तो मैं समथिंग लाइक इस तरह की शेप बनाता। अभी अगर एग्जैक्ट कर्व शेप बनानी है तो इधर 5-6 पॉइंट्स पे कैलकुलेट करो तो खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो कर्व शेप ही आएगी। अभी तो हमने सिर्फ 3-4 पॉइंट्स पे किए हैं, इसके दरमियान भी आप 3 पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शन निकालो और उनको कनेक्ट करोगे ग्राफ पे तो वो बनेगी ही कर्व शेप। तो ये भी समथिंग लाइक ऐसे बना देना, राइट, समथिंग लाइक दिस। So any other question? सर सर जहाँ जो पे हमने यूनिट लोड लगाया था शुरू में, Yes. तो हमने वहाँ पे इंटरनल हिंज क्यों नहीं दी थी जब हम बीएमडी के लिए वो आईएलडी का देख रहे थे? PND यहाँ पे ये इस पॉइंट पे हमने लगाया था। नहीं सर, जब हम इसकी अभी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। अच्छा, उधर आप क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही हूँ कि जब हमने यहाँ पे बीएमडी के लिए लिए, दिस वन। सर एक मिनट स्क्रीन लैग करी है तो मुझे नजर नहीं आ रहा अभी। दिस वन। जी सर। तो सर हमने यहाँ पे जो ऊपर वाली इससे डायग्राम थी उधर हमने इंटरनल हिंज क्यों नहीं लिया था? मतलब हमारे पास यहाँ पे डेल्टा ओवर अल्फा आ रहा है ना, हाँ, तो ऊपर वाली तो वहाँ इस डायग्राम में आप कह रही हैं? जी सर इससे ऊपर यहाँ पे हमने इंटरनल हिंज क्यों नहीं लिया था? अब वही मैं बता रहा था कि जब हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस बना रहे होते हैं तो हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे तो हम कोई चेंज नहीं करते। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर का पर्पस ही ये होता है कि आपने सिर्फ सारे एक्सटर्नल लोड लेने हैं और ये अज्यूम कर लेना है कि जो आपका पॉइंट है वो रेजिस्ट नहीं कर सकता मूवमेंट। जो भी हम फिर चेंज करते हैं वो हम चेंज करते हैं जब हम अपना रिडंडेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल इफ़ यू रिमेंबर हम रिएक्शंस के लिए क्या करते थे? हम सिंपल सा एक काम करते थे, अगर 3 रिएक्शंस हैं तो जो भी हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता था उसमें अगर एक रिएक्शन है तो बस वो हम रिमूव कर देते थे, सारे एक्सटर्नल लोड्स वैसे ही रखते थे। तो मतलब हम उसकी मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी या आप ले भी सकते हैं, डजंट में उससे डिफरेंस क्या पड़ेगा मुझे ये बताएं। सर फिर वहाँ हम मतलब डेल्टा कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, हम फिर अल्फा कैलकुलेट करेंगे डीई पे। अल्फा कैलकुलेट करेंगे? नहीं, अल्फा नहीं कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास हम डेल्टा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? पहली चीज़ तो ये है, डेल्टा क्या है? जब आपके पास इस पॉइंट, अब इधर कोई मूवमेंट तो नहीं लग रहा ना इस बीम पे फिलहाल, इस पॉइंट पे सिर्फ एक यूनिट लोड लग रहा है, उसकी वजह से डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस हो रही हैं। अब इस बीम पे आके मूवमेंट्स लग रहा है और उस मूवमेंट की वजह से आपके पास रोटेशन प्रोड्यूस होगी, तो वो रोटेशन फिर हम कैलकुलेट करेंगे इस। लेकिन जो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है इस पे तो सिंपल पॉइंट लोड लग रहा है, और ये पॉइंट लोड वही मूविंग लोड है जो कि आईएलडी में यूज़ होता है कि आप डिफरेंट जगह पे पॉइंट लोड रखते हैं। हम पॉइंट मूवमेंट्स तो नहीं रखते किसी पॉइंट पे। सर लेकिन अगर हमने यहाँ पे मतलब इसको ये नहीं बनाना कि ये मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकता। आप इसको इस तरह देखें कि जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना
उसमें कुछ भी नहीं किया हमने। लेट सपोज वो हमने उसको एज इट इज़ रखा है, जब हमारा रिडंडेंट स्ट्रक्चर आया ना तो उसमें हमने उस डी पॉइंट पे वो एक इंटरनल हिंज लगा दी है सो दैट इट कैन नॉट रेजिस्ट मूवमेंट। अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मेरे पास ये ई पॉइंट, तो ये जो ई पॉइंट था ये तो एक हमने खुद से बताया ना कि मेरे पास एक पॉइंट है, इस पे हमने निकालनी है, तो हम उस पॉइंट की डिफ्लेक्शन तो यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। वैसे तो फिर हमें सारी डिफ्लेक्शन कंसिडर करनी पड़ेंगी, लेकिन हम ई पॉइंट ही क्यों स्पेसिफिकली ले रहे हैं, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड इस पॉइंट की डिफ्लेक्शन है। तो हमने यहाँ पे यूनिट लोड लगाया और इस पॉइंट की डिफ्लेक्शन अपने पास रख ली, ताकि जब हम कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बनाएं तो सिर्फ इसी की कंसीडर करें, और जब हम रिडंडेंट स्ट्रक्चर पे गए हैं वहाँ पे हमने यूनिट लोड लगा दी है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन कि हमने इसलिए रखा हुआ है कि हम उसकी कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बना लें। और रिडंडेंट स्ट्रक्चर में आते हैं तो हम एक्सटर्नल लोड रिमूव कर देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर का पर्पस ये है कि आप एक्सटर्नल लोड का इम्पैक्ट ले लो उस पॉइंट पे जो कि आपका अंडर कंसिडरेशन है। ओके सर, थैंक यू। जी सर। ओके। So any other question? सर जब हम पहला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे थे कॉन्जुगेट बीम से पहले वाला, अच्छा हाँ पूछो सर उसमें हमने इंटरनल हिंज नहीं कंसिडर की, डी पे हमने हिंज कंसिडर किया था ना। तो फिर डी पे जीरो मोमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो इंटरनल हिंज का जो इम्पैक्ट आता है वो उस वक्त आता है ना जब आप उसको सेपरेटली कंसीडर कर रहे हो। अब जब मैंने इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई है तब तो मैंने इसको कंबाइन कर दिया। अब इधर हमने इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट्स लगाए थे, वो तो खत्म हो गए, तो उसका क्या रोल रह जाएगा? नहीं लेकिन सर इंटरनल हिंज मोमेंट रेजिस्ट तो नहीं करती, तो उस पे जीरो होगा मोमेंट। इंटरनल हिंज मूवमेंट रेजिस्ट नहीं करती तो उसमें मूवमेंट जीरो होगा, मूवमेंट जीरो होगा। एक सेकेंड लेट मी। अच्छा अब ये बताओ, जो इंटरनल रोलर है लेट सपोज, रोलर भी तो मूवमेंट रेजिस्ट नहीं करता, लेकिन जब वो इंटरनली आ रहा है तो उस पर मूवमेंट आ रहा है ना आपके पास? जी सर। आ रहा है, क्यों आ रहा है? जो मतलब इंटरनल हिंज का जो आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, वो ये है कि इंटरनल हिंज पे अब जब हम उसको बेसिकली इंटरनल हिंज बनाने का पर्पस क्या होता है, ये हमने बीएसए में भी डिस्कस किया था एक बार, कि इंटरनल हिंजेस का मेजर पर्पस यही है कि आपके पास अगर कोई इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं तो आप उनको किसी तरह एक अल्टरनेटिव मेथड के थ्रू डिटर्मिनेट बना लो। और वो कैसे बनाते हो कि आप जब उनको अब यहाँ पे देखो, मैंने ये वन और वन मूवमेंट लगाए हैं, इनका क्या पर्पस है? अब ये दोनों हैं तो सेम मूवमेंट, जब एज अ होल मैं बीम कंसीडर करूंगा तब तो ये ऐड अप होके जीरो ही हो जाएंगे, तो इंटरनल हिंज का तो रोल ही खत्म हो गया। लेकिन जब आप इनको सेपरेटली कंसीडर कर रहे हो तब आपको ये फायदा दे रही हैं कि आप इस वन को कंसीडर करके लेफ्ट साइड के लिए अलग कैलकुलेशंस कर सकते हो, राइट साइड के लिए अलग। लेकिन जब अगेन आपने इनको कंबाइन कर दिया है तो वो अगेन फिर से आपके पास सिंपल बीम बन जाएगी। और एक और चीज़ कि ये इंटरनल हिंज तो हमने खुद से इंट्रोड्यूस की है, ये बीम में गिवन तो नहीं थी। तो जब हमने इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है तब तो अगेन हमें पूरी बीम ही कंसीडर करना पड़ेगी। और दूसरी बात, जो इंटरनल रोलर और इंटरनल हिंजेस हैं उस पर जब आप ओवरऑल बीम कंसीडर करोगे तब मोमेंट की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि आपने जो कन्वेंशन यूज़ करते हो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए वो यही है ना कि आप लेफ्ट साइड से चल रहे होते हो, जितनी फोर्सेज होती हैं उस पॉइंट में मूवमेंट्स निकालते जाते हो। अब लेट सपोज ये पॉइंट है, इस पे आप मूवमेंट कैलकुलेट करो, डेफिनेटली यू विल गेट सम वैल्यू। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के लिए अगर हम कैलकुलेट करें 0.111 into 9, so that will be almost something like 1. So
अब मूवमेंट रेजिस्ट नहीं करती। मूवमेंट रेजिस्ट ना करने का मतलब यही है ना कि इस पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी मूवमेंट की वैल्यू आ रही है, और जो इंटरनल हिंज है वो मूवमेंट रेजिस्ट नहीं कर रही। अगर मूवमेंट रेजिस्ट कर रही होती तब इसकी वैल्यू 0 आ जाती। Does it make any sense? यानी सर जब हम BMD बना रहे हैं तो उसमें फिर हम जो हमने जो इंट्रोड्यूस किए थे 1 यूनिट मोमेंट्स जो थे वो हम कंसिडर नहीं करते। नहीं कंसीडर आप कैसे करोगे? वो तो अब आपने पहले ये 1 1 कब शो किए थे, जब आपने इन बीम्स को सेपरेटली मतलब इंटरनल रेंज लगाई, उन पे यूनिट मूवमेंट लगाया, सेपरेटली किया। अब जब आप दोबारा इसको कंबाइन करोगे तो ये 1 क्लॉकवाइज है और ये 1 काउंटर क्लॉकवाइज है, तो दे विल बोथ ऐड अप टू बी 0। ये क्लॉकवाइज है, ये काउंटर क्लॉकवाइज। जब आप इनको कंबाइन कर दोगे तो ये वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हमने इक्वल ठीक एंड है सर। ऑपोजिट मूवमेंट लगाए हैं, हमने अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाई उस पर। इक्वल एंड ऑपोजिट का पर्पज ही ये था कि वो ऐड अप होके 0 ही हो। ठीक है सर, थैंक यू। सर हमारे पास क्वेश्चन में डी पे इंटरनल हिंज था, मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल डी एक पॉइंट था। हमने उसकी मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी खत्म करने के लिए उस पे इंटरनल हिंज लगाया था। सर मुझे भी ये कंफ्यूजन है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, हम जब कॉन्जुगेट बीम में डी पे हम लोग रोलर ले रहे हैं ना, तो हम जो जैसे पहले करते थे कि एक सपोर्ट पे जो टोटल मोमेंट होता है वो मतलब समेशन ऑफ मोमेंट वो 0 होता है। तो इस केस में हमारे पास डी पे भी लाइक मोमेंट आ रहा है, बी पे समझ आती है कि इंटरनल हिंज है और वहाँ पे लाइक टोटल मोमेंट 0 ही होगा।